So first of all, yesterday problem, I was not able to find it what is going wrong, but I'll just did something else. Let me show you. So basically, our purpose is like we have Kafka and we have Zookeeper running, and also Redis was running, right? So service B will post some request, and service A will post some product, and we can see that from service B, right? But here I think lots of configuration is there is somehow it is not working with cloud stream. So what I did, I created a separate application. It is the Redis demo. If you can see, this is doing the similar thing. It is also a actually same thing, only let me just rename this file, and I think it will do the same thing. Okay. So basically, if you can see, this is my Redis config. I'm doing here the Lettuce connection factory, then Redis template. Here this hash operation is not needed actually, because we are using hash operation separately. And if you can see, this is my model product, and I wrote everything in the single class, right? If you can see, this is my Spring Boot application REST controller request mapping, enable binding sync dot class, right? And I'm using a Redis template. Here I'm using a listener, stream listener, the sync dot input, and here I'm just posting the product. And in the post mapping, delete mapping, get mapping, if you can see, I'm just taking the Redis template, then I'm putting inside that product, right? And here I can use product. So these are the things. Now I saw that it is running fine, and here if you can see, this is the application properties. It is not using the external configuration. I was feeling like that might be the wrong thing. Okay, right. So yeah. So service B somehow, Ratul, set the context. Service B with that Redis and Kafka, it was not running properly, and I think there is some. What I realized, there is some incompatibility with the version, right? Somehow I saw several places it is showing that lots of people are facing that issue with that cloud stream. So I tried to do it in a separate project. If you can see, it is not inside that microservice training. The simple Redis demo project, it is having a simple, right, microservice. So it is having this, these are the demo application, and the same thing, almost the same thing we are doing here. These are our mapping, though post mapping, delete mapping might not be needed, only the get mapping we are going to use, right? And here if you can see, this is my listener. In the listener I am using sync dot input, and I'm taking the product, I'm calling that post call. This is the method, right? And in the resource, in the application dot properties, I kept everything so that it will not give you, right, it is not using the eureka or the other things. Now, and it is outside of the microservice, but it is listening to that same topic where the service A is posting. Now give me the, let's it is running fine. Let me rerun this. Here everything is running. Config server running, auth server running, eureka server 3 running, gateway service running, service A running, service B also running. But yes, we are so let me clear this.
Okay, I believe released him also up. Yes, it is up. Now let's do one thing. uh, this is my localhost 60,000. So first what I need to do, I need to first take a token, right? As you can see, this is my gateway service, auth service, auth token, right? I will take it. I got the access token, right? I'll use this access token to call service A, and I need to give API v1 product. This is my post method. In the body I need to take raw body JSON format. I need to only give here the ID. Assume that ID is 145, and I need to give the name. Assume that it is product. Okay, and I need to use this token in the header. Copy, okay, send it. Full authentication required. What happened? Is it not the full authentication? What's it? I'm doing the header. Token is correct. I think token is not correct. Yes, token was somehow, it was mistake. So it is able to now see. This is the service A, right, where I posted the product, and my expectation is that I can actually get that same product, right, from this service, and this service is running on 8080 because there is no server dot port is mentioned, right? So let me call that 8080 with the product ID. Okay, 145 here. Okay, endpoint is model. Don't go into. So yes, you can see what you posted product. It is, I'm able to get it 145 product, right? Now if you can see a random, give me a random number 198, it will give me that nothing is found, right? Nothing is found. But if I post it, oh, sorry, if I post it 198 with product 1, and then if I post the get method, I'm getting it product 1. Okay, able to understand?
how this whole thing happening? Yes, no. Hmm. So I don't know what if when it if you can see the same code, same thing is running, but if you can see the service B is failing, still failing, and it is saying. So what I did, I actually I hosted two listener from service A, one with one consumer group and another with another consumer group. So basically, service B is under one consumer group, and service the Redis demo is another service, actually consumer group. So service A is failing because of the similar error. If you can see, they're saying that dispatcher has no subscriber for channel, but I don't know how it is happening. It should not happen. Yeah, so basically the other Redis demo is working, so I think we can take it later, whenever we will do some project, and there the if it is needed that we need to do it, then I think we can you know uh, expedite that time that what going wrong, and we can take it separately. Okay, fine. Now let's go to the logging pattern and distributed tracing. Okay, so distributed tracing logging, right? Before going to that, uh, let me show you what I tried to see by logging. Okay, so now, as of now, you wonder. So any question before we go ahead? कुछ question है? No? Yes? ठीक है. Great. I'll share this code so you can take a look and you can do it. I also share the code of the service, the Redis demo, right? So you can take a look, right? Now, the last thing in the microservice thing, not the last thing I would say, but except the deploying pattern, right? This is the only way, right, where we can solve the last problem statement. What is our last problem statement? You have multiple microservices, but how can I, you know, how can I uh, see all the tracing actually? Let's forget about the log as of now. Log can be done. Log is means log is the secondary part, but first is the distributed tracing. What do you mean by distributed tracing? You did one call from one service, right? And this call service, then other again, the service A is taking some time, service B, it is calling service B, service B is taking some time, service C is taking some time, service D is taking some time. Because of the flow, service D is not calling for that transaction, right? But it is very good if we can show everything in a single picture, that okay, this is my transaction. So it is propagated from service A. Service A took this second, service B took this second, right? So it will be very efficient for everyone to trace something. Yes or no? And it is required because it's not like that everything you are getting in a single log file, or everything you are not you are getting in a single places, right? So how to solve that problem? Any idea? मतलब कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग है? सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एनी आइडिया? सो एक आइडिया है कि अगर हर एक ट्रांजैक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, सो आई नीड टू गिव ए यूनिक आईडी टू द ट्रांजैक्शन. ओके, यस, है ना? एंड मेरे को उस आईडी को पहली जब पहला बार जो मतलब कोई सर्विस में जा रहे हो उस टाइम पे उसको इंजेक्ट करना है, और सेम आईडी को सब जगह प्रोपागेट करना है. यस, सर्विस बी में जाएगा वो आईडी जाएगा, सर्विस सी से जाएगा वो आईडी जाएगा, राइट? दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज, हमको कुछ ना कुछ तो एंड ईच एवरी सर्विस इज एक्चुअली एमिटिंग द लॉग, राइट? इट इज एमिटिंग द लॉग कि कुछ भी हो रहा है, मैं लॉग को
कहीं पे मेरा एक सेंट्रल सर्वर है, सेंट्रल सर्वर को मैं वो आईडी, मेरे ये आईडी मेरे पास आया, इसमें मैंने इतना सेकंड लिया, वो मैं डेटा अगर कोई सेंट्रल सर्वर को दे दूंगा, एंड इफ एवरी सर्विस इज गिविंग दैट टू दैट सेंट्रल सर्वर, देन सेंट्रल सर्वर विल हैव ए कंसोलिडेटेड कि एक ट्रेस आईडी और एक तो कोरिलेशन आईडी और एक ट्रांजैक्शन आईडी इज रिपोर्टेड फ्रॉम मल्टीपल सर्विसेज. नाउ इट नो दैट कब आया वो सर्विस, राइट, एंड उसमें मेंशन है कितना टाइम उसने लिया, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा मेंशन होगा, बहुत सारे मेटा डेटा उसके अंदर रहेगा, राइट. So then it is very easy for the central server to just visualize those data in a correct format कि इसमें इतना टाइम लिया, इसमें इतना टाइम लिया, ये इधर गया. Yes, no, good, right. So how to implement that, right? Very easy. So Spring is actually doing this thing in the out of the box. Okay, what Spring is doing that you no need to do anything. आपको कहीं पे कोई correlation ID, कहीं पे filter filter लगा के कुछ नहीं कर. आपको क्या करना है, just take a look what you need to do. You need to, I'll go in the service A. Okay, I'll go into the service a.pom.xml file, right, and I will add two dependency. ठीक है, एक है, एक already added है, yes, one is already added. This is my sleuth. So just take a look this sleuth dependency. Okay, so what dependency I need to add, this is my Spring Cloud Starter sleuth. ये sleuth क्या करता है, it is injecting a correlation ID, lots of ID, not one ID, trace ID, span ID, जो भी उसको चाहिए वो सारे ID यहाँ पे इंजेक्ट करता है, और इंजेक्ट करने के बाद आई वो प्रोपागेट कर देते हैं, राइट. सो ये स्लूथ, every service should have this dependency. So what is the advantage of this? And service A is means when it is in the service A, and if service A is seeing that okay कोई correlation ID नहीं है उसमें, तो एक correlation ID उसको देते हैं. फिर the same request when it is going to service B first take a look that इसमें कुछ ID attach है. Yes, if it is there it will not do anything. If it is not there it will add another correlation ID. So what is the advantage you are getting? You are actually propagating, you are creating the ID in the first call, then you are propagating the same ID in multiple places. This is the sleuth is doing. Next thing what you need to do, you need an external server, right, who is going to propagate or who is going to take care of the, means where you will just emit the log, right. So for that what you need to do, so there is another application called Jenkins, right. Jenkins is a, Open Jenkins is a tool, right, which initially I think uh, you can run your Jenkins server, but now actually Jenkins released their own Docker image, so you can actually use their Docker image to do the things. So nothing is should be needed, but here what you need to do, I'll just show you in a Spring.starter what are the dependency you need, but I'll add those. First of all, let's create a demo project. Yeah, just take a look. First of all, you need to use sleuth. Okay, and the second thing is the Jenkins client. Okay, if I generate this project, we go to pom.xml file. These are the two dependencies I need. Okay, so I'll go. Okay, this is my, I believe, Spring A. So sleuth is already there.
So let me delete this dependency, and I need to use the same thing, service A, service B. Okay. Sorry. We can say this is my Jenkins, this is my soup. Okay. Now, if you were coding with me, whatever your application state, right, you can use these two, right, so to test it. But one thing is needed. You need a, what you need. Let me finish it in your notepad. Okay, so after doing these two dependency, if I rerun these two project, and one more thing, in any request I need to log something so that I can see, right, what is happening, because nowhere I am using the logging. Let me take a look. I in the controller, so I'll use that port. Yes, so here if you can see, you can add the logger. So for logger you need to use this logger factory dot get logger message controller. This type of thing you need to write for every class, or if you are using a, you know if you're using a lombok, you need to at least annotate with at the rate slf4j. Okay, so after doing this, I'm just typing that in service A. Okay, logger info in service A, and whenever I am in the service B here, and here I'm giving service A. Here I'm giving service A. Okay, can you see? Now let me rerun these two services and let's see what is the log. I'm saying that ID, right? As of now, there is no Jipkins I have set up, right? It's just like that log, nothing Jipkins, nothing is happening. Now to set up the Jipkins, what you need to do, you need to get the cloud image of Jipkins, right? Let me take a look. It was there, किधर है? Docker image Jipkins. Open Jipkins, right? This is my Docker image. Okay. ठीक है. Now what I need to do, मैं sign in. ठीक है. मैं सीधा रन करूँगा. Just I'll just take that name. That is fine. बाकी तो मैं रन कर सकता हूँ. So what I'll do, I will docker run. Okay. मेरा ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया था इसको, तो ऑलरेडी मेरा पूल में होगा, डॉकर पूल में, तो आई नो नीड टू पूल दिस थिंग, बट आई नीड टू रन दिस, एंड इन द रन आई नीड टू रन दिस detach mode and p, so 99411, एक ऐसे रैंडम पोर्ट यूज़ करते हैं 99411 कि मेरा 9411 में जिपकिंस रन हो जाए. ठीक है.
This is my expectation. Docker response driver fail. Port is already available. Oh, sorry. सेशन को डिलीट कर देते हैं. ठीक है. Now it is running. I think it will. क्या इसका ग्रीन नहीं हो रहा है. ओके, दिस इज द ओपन जेटकिंस. इट इज ये फोर छोड़ दो, इसको डिलीट कर देते हैं. ये फेल वाला है. 9411 में और सी एस मॉनिटर में क्या है बन गया. ये जिपकिंस मेरा होस्ट हो रहा है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू if I run a port API, what is happening. Okay, so to run a port API, what you need a token headers में है. So I will do the 60,009 service A API dot port. ठीक है. So what it will happen, it will go to the actual service B. Service A, it will start from service A, it will go to the service B, right? Let me show you what is happening. अरे एक्सेस तो करें एक्सपायर इतना जल्दी कोई नहीं. पुराना टोकन होगा. ठीक है. Let's see what is happening. So I'm getting the response, right? 60,005. But let's take a look what is written in the server. जो log है, right? So यहाँ पे देखो log. पहले सर्विस A का log देखते हैं. सर्विस ए का लॉग में देखोगे सो इनसाइड सर्विस ये वाला लाइन आया. उससे पहले भी कुछ लाइन आया जो मेरा ये टोकन भी टोकन मैंने प्रिंट किया था. बट व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग आई कैन सी इन द लॉग. दिस इज माई एक्स्ट्रा थिंग. यहाँ पे देखो 2 आईडी है. एवरीवन कैन सी. लेट मी राइट इनटू दैट नोटपैड, देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. ये है सर्विस ए का log, and let me take a look on the service B log also. What is the difference you can see in these two? Can anyone observe? First, exactly. So Sloth inserted 2 ID. One is span ID, one is trace ID. This is the trace ID, and this is the span ID. What does it mean by span ID? Span is the unique ID which is which is on the same service span. Okay, and this is the distributed trace ID. कहाँ से जा रहा है ना? Understood? What you did for that? Nothing. Just added a dependency of Sloth in your Microservice. Nothing else you are doing. Now open Jenkins, and it is also very easy. Let me show you what you need to do, right, to write the dependency and everything. Okay, what you need to do. So you need to give that Jenkins server. Okay. So spring.jipkin.base URL.
So I think okay. Yeah, spring.jipkins.base URL 9411. ठीक है, ये मैं सर्विस ए में दे दिया, किधर हूँ मैं, सर्विस बी में, एंड सर्विस ए में भी लिख दिया सेम चीज़. ओके, देन आई विल commit it. Git push और एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा सर्विस से सर्विस बी को. पहले एक चीज़ देखते हैं कि जिपकिंस रन किया, बट जिपकिंस कहाँ रन हो रहे हैं, मतलब क्या देख, कैसे मैं देख सकता हूँ. बहुत ही सिंपल. HTTP go to here, localhost 9411 hyphen jipkin, and you can't believe it what is happening here. ठीक है, it will first show you one application जैसा कुछ दिखेगा, डैशबोर्ड, right? And if you can see, you can search by trace ID, run query. But before doing to, अभी जिपकिंस में किसी ने कुछ log नहीं किया, right? Anything you haven't sent. Let me send something, then it will work fine. So I have committed these two. Now I'll go to the services service B. I'll restart those. Okay. In the meantime, let me do the service A also. Let it run. So this way service B is running, service A is running. ठीक है, both are running. Yes or no? अभी let's see to do a port, and let's see the magic what is happening. So port is running, और रुक जाओ थोड़ा थोड़ा टाइम में. It will take some time to reflect actually यूरेका में. हाँ, तो 60,005 ना अभी जिपकिंस में देखते हैं, एंड जो चीज़ आपको दिखेगा, आई विल बी सरप्राइज दैट वॉट एवर यू आर रिक्वायर्ड इट इज शोइंग. व्हाट इट इज शोइंग, ये रिक्वेस्ट स्टार्ट हुआ सर्विस ए से, सर्विस बी तक गया. इट टुक 4.936 सेकेंड and it took 2.207 second. Okay, and if you can see, 4 plus 2
Okay, somehow it is not matching, but actually yes. So this is the actually, no, no, sorry, it is I think 4.9. So it is the whole timestamp. If you can see, सर्विस ए से सर्विस बी मी में गया, बी से फिर आया, फिर ये लिया. So it took 4.934 and the some network delay, that is the 5 second. If you can see, that is taking 5 second, but individually service B took 2.207 out of this 4.934 second. Okay, can you see? And if you can see, this is also host path API v1 port, this is the controller class, and this is the method. Okay, और क्या चाहिए? This is my trace ID. Okay, the same trace sorry ID, if you can see, you'll get it. This is the trace ID. ठीक है, अभी मैं अगर इसको find a trace करके उसी trace ID को, okay, you can write lots of queries here. जैसे सर्विस नेम इज इक्वल टू सर्विस ए, एक क्वेरी है. तो स्पैन नेम, गेट एपीआई पोर्ट है, रिमोट सर्विस, ओके, जो भी है, रन क्वेरी. सो इफ़ यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, इट इज़ जस्ट लाइक ए जीरा का जो डैशबोर्ड होता है ना, जैसे डैशबोर्ड जैसा. सर्विस फिल्टर, इफ़ यू वांट टू सी द सर्विस ए का कितना हुआ, राइट, एंड इफ़ यू वांट टू सी सर्विस बी का कितना हुआ, राइट. सो यू कैन डू एवरीथिंग. ठीक है, गुड, मज़ा आया इसमें, जिपकिंस में. ठीक है. The last thing, because of my limitation of the system, I am not able to show you, but I'll explain you. That is the एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया था. चलो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, जहाँ पे मेरे को एक ट्रेस आईडी दूंगा तो मेरे को पूरा बताए कहाँ से कहाँ गया था. बट इफ़ आई वांट टू शो द लॉग्स, हियर इफ यू कैन सी देयर इज नो प्लेस वेयर आई एम, यू कैन सी द लॉग्स, राइट. सो लॉग्स को हम कैसे देख सकते हैं? स्लूथ ये हेल्प किया कि मेरे को सारे जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर एक आईडी डाल दिया. ठीक है, स्लूथ हेल्प मी दैट, एंड दैट इज इवन द जिटकिंस में भी हेल्प हो रहा है. बट लॉग्स कैसे देख सकते हैं? सो लॉग्स देखने के लिए अभी जो सबसे बड़ा जो टूल है, जो ओपन सोर्स टूल है, एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट, देयर लॉट्स ऑफ टूल्स एक्चुअली, नॉट अ सिंगल टूल. पेपर ट्रेल है. पेपर ट्रेल इज ए, आई थिंक उसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो थोड़ा ओपन सोर्स नहीं है. स्प्लंक है, स्प्लंक बहुत कंपनी यूज़ करता है. हु नो स्प्लंक? किसको पता है? स्प्लंक नाम सुना है? एग्जैक्टली, बट स्प्लंक का नाम सुना है, राइट. बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्प्लंक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन लॉग के लिए, कोई भी एनवायरनमेंट लॉग के लिए, राइट. नाउ we are actually we can do ELK. Anyone has any idea what ELK means? Yes, no, nothing. Okay, let me explain you what does it mean. So ELK is a tool actually. It is developed by Elasticsearch.co करके कंपनी है. ठीक है, तो ELK का तीन पार्ट है. एक है इलास्टिक सर्च, दूसरा है लॉग स्टैश, तीसरा है कीवारा. ठीक है, दूसरा एक चीज़ है, मैं टेल यू दैट बिट्स, फाइल बिट्स, बट इसका नाम, मतलब यू डोंट नीड फाइल बिट्स एवरीवेयर, but these are the three things. What is the purpose you are doing and how you are doing that? So first of thing, this is this is a database. Okay,
Elasticsearch is a plain database, elastic database. Logstash is what? It is the pipeline. Kibana is the dashboard, UI dashboard. This file bits is the file processor. Okay, can you hear some noise? Ignore that. Okay, so Elasticsearch, Logstash, Kibana, file bits. What I'm trying to say. Whenever your application you are running, you are where you are running your log, right? So there is a lots of things. You can run your log in a simple file, right? Just like nohub.com, something like nohub, right? You can run in your log in your local system also. You can just mention the logging files, right? So each and every files you can write all your logs in a file, right? And my basic purpose is Logstash will work as a pipeline. It will read from that file and it will process that data, doing some filtering or some formatting. Then it will send those data to Elasticsearch. Elasticsearch is a database here. Okay. On the other side, Kibana is the UI dashboard, and Kibana is actually is like your it use the KQL, Kibana query language, right, where you can just write something. I want to see the all logs for the trace ID this and pattern. You need to just define the pattern, and based on the pattern, Kibana will search in the Elasticsearch and it will show you what are the logs present for this trace ID. This is the core idea behind ELK. Okay, now it is somehow little bit awkward or something, but I'll just show you. But because of the if I start running, everything will be exploded because it needs lots of memory, and somehow I am not able to do it. So I need to try to take a look that how to optimize it and think. But I'll show you some code on the ELK setup, right? So if you can see, let me show you the Docker Compose file. Docker Compose is a file where I'm mentioning all the Docker things, right? So if you can see, Kibana is not here, but it is like Elasticsearch, and this is my Logstash. Kibana will be another Docker image, Docker part, or another service in a single, right, things. So here if you can see Elasticsearch, I'm taking the image, I'm taking the container name, this is the port I'm running. These are all of the things, right? I'm doing it here, right? These are the things. If you see the logs test is like there is something called docker file dot logs test where I'm actually this is an example where one SQL server, right? If you're doing any changes, that should be go to that uh, my Elasticsearch. So this is the configuration for that, but don't go into that. Basic idea is like you need to run the logs test, and in the logs test you need to give all these thing. What are these thing? First is pipeline.yml. In the pipeline.yml you need to mention that what are the pipeline you are want to give and what is the configuration for that. So it is a pipeline, so you want to take the log from the scratch, right? So it is name is from scratch pipeline. Then you need to mention the path config, and in the path config you need to give that what is the configuration. So if you can see the configuration, here is the thing. What I'm doing, I'm first taking the input from type is log. Assume that this is my path where your log file is present. Just you need to change these based on that where you it is running. And this is the filter. You want to remove some field, version, timestamp, or you can to add some more field here, you can do this. And output, it should go to the Elasticsearch. Okay, with the index, means index is the database for Elasticsearch, right? And yes, so index is not the database, index is the table equivalent to, if you can see the DBMS. So index is the table, and how you are going to do the document ID or anything, you can take the timestamp for the document ID.
Here I think there is something book ISBN, leave it. So if you give this configuration, and if you mention that pipeline.yml, that this is my pipeline, right? And yeah, that's all. Then I think log test will work eventually. And these two, everything is being used by in this docker compose.yml. What you can see, it is like that you need to first copy that pipeline file, then you need to copy that tml pipeline.yml. Then if you're using any queries, so lots of queries having, but for our logs case there is no queries, so you can ignore the third part. Right, you need to mount this volume and you need to run the logs test. Okay, so if you're running that, after that whatever you are writing, logs test will take those information and it will inject to elasticsearch. And on the other side there will be one part where is kibana will take that data and it will actually show you in a very good format. Okay, if you have docker, you can try this thing, you will get lots of information. It is not, it is actually why I'm not covering intentionally or whatever. It is not actually not falling in the spring thing, right? So it is not related to any coding or anything, it's just like a configuration you need to do some some places, right? So you will get lots of information about how to set the elk, how to take the log, right, if you're running in a docker container. And eventually when we discuss the docker, we might take this as an example and we can implement this thing. We will take one microservice, that microservice will run in a docker, and I will run this thing elk to take the log from the docker and show it a kibana. Okay, I think this is all in the microservice pattern, right? Now the last part of it, which is the code development pattern. ठीक है. Any question before we go ahead? No? Yes? ठीक है, बाकी जो पार्ट है बहुत ही थियोरिटिकल है. सो लेट्स सी, राइट? तो so you have you all of three, right? You have experienced lots of project in your you know tenure or whatever you think about it, right? So your role is basically a developer, might be developer or might be something you are contributing to the design also, right? Now दुनिया चेंज हो रहा है. If you see one video of microservice architecture of Martin Flower, so he mentioned one day कि पहले आर्किटेक्ट मतलब समझते हैं कि एक suited booted आदमी आएगा who has 20 years of experience, 23 years of experience, right? And he's कभी कोड नहीं करता है, ठीक है, बट वो फुल्ली बी लेवल होता है कोई भी प्रोजेक्ट में, ठीक है. आते हैं, ज्ञान देते हैं, एक स्लाइड दिखाते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड चले जाते हैं, right? That is the image of a solution architect, or that is the image of a who is designing your project. Yes or no? गलत बोला? वेरी ट्रू. एंड जब वो चीज़ डेवलपर के पास आते हैं, डेवलपर ने उसको अलग समझते हैं, ठीक है. डेवलपर अपना लैंग्वेज में समझते हैं, ही डजंट अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लैंग्वेज, ठीक है. एंड कुछ टाइम बाद डेवलपर ऑल्सो लॉस्ट, क्योंकि दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग. क्यों चाहिए? एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए you need to do lots of here and there bad things which might slow your application. Okay, so there are two principles in the architect also. First principle is kiss principle. No, anyone know about kiss principle? It is sounding little bit awkward, but it is the true principle. One principle is there.
Keep it simple and stupid. Okay, whenever you are designing a system, who is designing the system, you have to be very simple and stupid. Modern doesn't means complex. Modern means simple. Okay, if you and everyone has to have that mindset that okay, microservice is coming, right? Microservice is coming, and how I can evolve to, or how I can adapt the microservice, I don't know anything. I don't know what will happen. I don't know if I can survive in this organization or not. Let's not think about that way. Your mindset should change to the other way. You have to think it, that whatever you are doing, there might be some complexity, there might be some problem. Microservice came to solve those problems. If you can just take a look on the last thing we did, the Jipkins, how easy it is. Can you imagine this? How easy it is, means, or take a look on the resiliency forge. I told you, if someone is telling you कि I need a service whose rate should be this, right? It will be very difficult to implement it. But using the microservice pattern, you can eventually implement it within a day and with graceful. It's not like that कैसे भी जुगाड़ करके बना दिया, graceful कर सकते हैं. So the core idea behind is like, you know, if you want to survive or if you want to know about the microservice, you need to look at application in three ways, right? सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि तीन आंख होता है. एक होता है आर्किटेक्ट का आंख होता है, जो हाई लेवल पे सब कुछ दिखता है कि अच्छा इसको ऐसा चलेगा, इसको ऐसा चलेगा, जो उसको हम इन फिल्मी वर्ड वी कैन से द डायरेक्टर, राइट. सेकंड चीज होता है जो डेवलपर, राइट. एंड द थर्ड थिंग इज द डेवऑप्स, जो सिनेमाटोग्राफर या जो भी चीज करता है. एंड डेवलपर इज द रियल एक्टर. ओके, so let's see what are the each role and how this they will see this microservice. So basically आपके पास एक प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोजेक्ट है कि मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें मैं चीज़ बेचूंगा. आई हैव ए प्रोडक्ट एंड आई विल जस्ट सेंड इट टू द कस्टमर, ठीक है. एंड द मटेरियल इज ए फिजिकल मटेरियल, सो यू नीड ए डिलीवरी सिस्टम. मतलब मैं कस्टमर कैन बुक माई ऑर्डर and I will just deliver that order to him. There will be cash on delivery or payment, whatever is in the modern day we are using. So whenever this thing came into a architecture, solution architecture, how he should think. Assume that you are a solution architect. आप क्या करोगे? तो पहले दिन से कोड नहीं करने लग जाओगे. अच्छा ठीक है, चलो एक कस्टमर सर्विस बना लेते हैं, क्रूड ऑपरेशन बना लेते हैं, जहाँ पे कस्टमर रजिस्टर करेगा, कस्टमर क्रिएट अपडेट. पहले दिन से आप नहीं करोगे, राइट. So what is the best way to see, look at the picture, right? You need to first identify the entity. Who are my entities and what they can do, right? So first of all, you need to describe the business problem. What is the business problem? Business problem is I have a product. One customer, right, can see the product. ठीक है? तो the customer is the noun, product is the noun. Want to see is the verb. ठीक है? आपको ऐसे सारे यूजर स्टोरी को एक बार देखना है. Customer can see the product. Customer can log in into a system, into my system. Okay? Customer can buy my product. Delivery person can, what you can deliver the product. Delivery person can be notified the product, right? You need to write all this story. Those we are calling it the Jira story. Okay. Here, if you can see the noun you are using, those are the domain object, and verb will be the functionality. What I'm trying to see? Noun is the domain object. Customer is my domain object. Product is my domain object. Delivery agent is my domain object. Right? Customer can see
is my functionality. So I need to, you know, break that thing. So I need to first understand all the domain object and what are the functionality needed on the domain object. Second thing, establishing service granularity. Now I need to write the service, but how we can do the things? I wrote everything, नाउन सारे वर्ब सब कुछ लिख लिया, अभी मैं क्या करूँगा, उसको तोड़ूंगा जो रिलेटेड है. जैसे कस्टमर का 5 फंक्शनलिटीज है, someone can register it, customer can register it, customer can do their thing, right? तो मैं वो सारे फंक्शनलिटीज को एक जगह पे रखूंगा और उसको एक सर्विस नाम दूंगा. सारे फंक्शनलिटी विल बी माई वन वन एपीआई और एक एक एंड पॉइंट है. आई विल क्रिएट ए कस्टमर सर्विस. मैं देख रहा हूँ कि अच्छा बुकिंग इज अ फंक्शनलिटी, बुकिंग में बहुत सारे रोल्स होते हैं और परचेज में बहुत सारे रोल होता है. परचेज सर्विस इज माई फंक्शनलिटी. प्रोडक्ट एक इन्वेंट्री सिस्टम होता है जहाँ पे प्रोडक्ट कोई ऐड कर सकता है, कोई प्रोडक्ट कोई बाई कर सकते हैं. प्रोडक्ट सर्विस इज माई अनदर functionality or another domain services, right? Now next thing what you need to do, how you are going to compute this thing. What I'm trying to say by computing this thing, how you are going to call one domain to another domain. आप एक परचेज के सिनेरियो ले लो. परचेज अगर आपको करना है, what you need, you can't purchase, you can directly go to the purchase service, right? But purchase, you need the two side of it. One is the customer, another is the product. So how you will communicate and you will get the customer details, how you will communicate and get the product details, right? It should be restful, it should be asynchronous and it will be cacheable. It's like that how we did this thing, that any customer is getting onboarded, it should be actually given to purchase services, that this customer has updated the address, so next purchase should be delivered on this address. Or any product quantity, right? Someone is adding in the cart, right? And sometime real time is happening, there is some change in the product inventory, so you need to notify the purchase service that this order should not go, right? How the communication will happen? So that is the end of the architecture side. So architecture's job is to see the big picture, how application can be decomposed and type of interaction between each component. Okay, this is the architecture. समझ में आया what I want to say, what I'm trying to convey? अभी आर्किटेक्चर डायरेक्टर है, सब कुछ लिख दिया. देन कमिंग टू द पेज टू डेवलपर्स प्लेट. अभी डेवलपर क्या करेगा? तुम्हारा काम है, तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे ठीक है मैं एक काम करते हो कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट करते हो, स्प्रिंग बूट में नया नया हो, सो आई जस्ट बिल्ड द बेसिक स्केलेटन एंड बेसिक स्क्रिप्ट. व्हाट इज द बेसिक स्क्रिप्ट? बेसिक स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन शुड बी डिफाइंड यूजिंग फ्रेमवर्क. कोई स्प्रिंग बूट यूज करेगा. एग्जाम्पल, बिल्ड स्क्रिप्ट विल बी मैपिंग. मेरा एक पॉम डॉट एक्सएमएल में मैं बिल्ड स्क्रिप्ट लिखूंगा और ये मेरा स्प्रिंग बूट है, राइट? डेवलपर राइट्स द कोड एंड अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क विल डिलीवर द माइक्रो सर्विस. उसने माइक्रो सर्विस बोल दी, ये सर्विस बनेगा, अभी तुम कोड लिख के उसको डिलीवर करोगे. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? बूटस्ट्रैपिंग द एप्लीकेशन, राइटिंग द बूटस्ट्रैप क्लास टू स्टार्ट द एप्लीकेशन, राइट? आपने स्केलेटन बना दिया, अभी उसको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है. स्प्रिंग बूट में जैसे करते हो एट द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हो गया. If you have worked on some several other application, you need to write lots of things. web.xml फाइल, ये फाइल वो फाइल, बहुत कुछ लिखना पड़ता था. अभी सब कुछ चला गया अब आफ्टर दिस स्प्रिंग बोट थिंग. The last thing, building the doorways into microservice. Building the doorways like controller in spring boot project. आप क्या कर दिए? आप हाई लेवल पे पूरा एक कंट्रोलर बना दिए कि मेरा इतना एपीआई रन होगा. ओके, गुड. उसके बाद आप फंक्शनलिटी ऐड करते जाओगे बेस्ड ऑन द आपको इसने जो भी बोला. नाउ कमिंग टू द डेवऑप्स आई, एक्चुअली जो एग्जीक्यूट करता है चीज़ को, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एज्यूम दैट यू डेवलप. सिनेमा का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी सिनेमा बन गया, अभी सिनेमा को दिखाना है लोगों को, एक्चुअल डिप्लॉय करना है, सेल करना है. हाउ विल डू दिस थिंग? सो डेवऑप्स जॉब इज to bring intelligence into deploy and overall maintenance, right?
देखो ये क्या कर रहा है, देखो मेकिंग श्योर ईच सर्विस शुड बी सेल्फ कंटेंट माइक्रो सर्विस आर इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल। डेवऑप्स क्या बोलेगा कि यार तुम्हारा स्टेटलेस होना चाहिए, मैं उसको मल्टीपल इंस्टेंस बना सकता हूँ सो दैट आई कैन डिप्लॉय एनीवेयर एनी प्लेसेस। माइक्रो सर्विस इज कॉन्फ़िगरेबल। Make sure each microservice should be configuration from a centralized location. What is this? Externalized configuration. Spring Cloud config server. बोलेगा कि मेरे को यार बार बार डिप्लॉय करना मुश्किल है, मेरा ऑलरेडी क्लाइंट इज कंज्यूमिंग दैट सर्विस, बट हाँ एक चीज़ कर सकता हूँ मैं, आपने कुछ अगर नया चेंज डाल रहे हो, मैं उसको 5 इंस्टेंस चल रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं पहले इंस्टेंस को रन करूँगा, मतलब कुछ चेंज करूँगा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में, फिर फर्स्ट इंस्टेंस को रिफ्रेश कर दूंगा। तो जो भी रिक्वेस्ट जाएगा फिर धीरे धीरे एक साथ सबको डाउन ना करके धीरे धीरे मैं कर सकता हूँ। ओके, मेकिंग माइक्रो सर्विस ट्रांसपेरेंट टू क्लाइंट। क्लाइंट को पता नहीं होना चाहिए माइक्रो सर्विस किधर रन हो रहा है, क्या पैटर्न है, गेटवे पैटर्न और द डिस्कवरी पैटर्न, राइट। मेकिंग श्योर माइक्रो सर्विस शुड कम्युनिकेट इट्स हेल्थ। आपको माइक्रो सर्विस का हेल्थ पता होना चाहिए कि वो डाउन है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उसका लॉग जाके देखूंगा, लॉग नहीं भी लिख रहा है, स्टक हो गया तो हाउ डू आई नो, राइट। So this is the thing which is being done by the my discovery server, Eureka. Okay. So this is the done of the code development pattern. And I think the final take what I described yesterday, you got the thing. Your code base should be separate, dependencies should be separate, config, backing service, build, release, run should be separate, processes, port binding, concurrency, disposability, dev, prod, parity, logs, and admin process. Okay. So this is the basic of the code development pattern. Okay. So if you are really interested and grow night yourself, so you need to jump into this 3 area. You can't be stick on one places. And believe me, if you are able to understand these 3 places, then you are actually a jewel developer. And every company is asking that. If you can see, big companies are not taking the solution architect. Okay, because they understood, okay, the design and the actual thing should come from the lower end, the developers should tell me, because they are very dynamic. If what happened, if I am a 10 years experience, right, I always write something with my comfort zone, whatever I understood better, but I don't know that my comfort zone is sufficient or suitable or the perfect fit for my project requirement. It might not be, right. I'm a lazy guy. I don't read or the notun and new features. I don't study the new features or anything, right. I'm a lazy guy, a old school mentality, right. चलने दो, फाइल आया तो ये प्रोसेस होगा, ये डेटाबेस का ये प्रोसेस होगा, हम नो एसक्यूएल जाएंगे ही नहीं, हम हमेशा ये पिंग करते रहेंगे नो एसक्यूएल में, यार ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा, नो एसक्यूएल कौन मैनेज करेगा, स्किल नहीं है इंडस्ट्री में। नो, my intention should be I need to always update it by the technology. What why Mongo came into picture? If you can see, Mongo is the most NoSQL top databases. Why Mongo came in? What is the necessity of the Mongo? I can tell you one scenario why Mongo came into picture. Anyone has a question why MongoDB is came into picture? Why Facebook is not using a relational database, instead of that they develop the Cassandra? Anyone can give me any example? What is the real problem? बोल सकते हो कोई? सिंपल है। माइक्रो सर्विस का कितना इंस्टेंस चालू है? बहुत सारे। सारे माइक्रो सर्विस एक ही डेटाबेस को कॉल करेगा? हो गया ना, खत्म। आप कैसे माइक्रो सर्विस करोगे? आप कैसे लोड को बढ़ाओगे? फेसबुक का कोई भी कोने में जाके कोई भी कुछ कचरा लिख रहा है, उस कचरे को सब जगह फैलाने की जरूरत है क्या? ठीक है, एक टाइम के बाद फैल जाएगा, बट यू हैव टाइम, राइट। एक अपडेट मारने के लिए
आप पूरा एक डेटाबेस को इतना सर्वर को एक साथ करो, डिस्ट्रीब्यूट करो उसको. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड? Yes, our requirement and our things is like we understood that we no need to. So anyone know about the cap theorem? कैप थ्योरम भाई इंटरव्यू में पूछेगा है. कैप थ्योरम बोलो बोलो, किसको पता है कैप थ्योरम? स्पेलिंग गलत हुआ. कंसिस्टेंसी, एटोमिसिटी, परसिस्टेंट टॉलरेंस. कैप थ्योरम के बारे में पढ़ना, हर एक इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज कैप थ्योरम. कैप थ्योरम ये बोलता है कि कंसिस्टेंसी, इफ यू आर you know building one application that is consistent, that is atomic, and that is persistent tolerance, then it's like a in matlab it is not possible, eventually it is not possible. Any application can touch two things, not three things. ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ. पहली बात, कंसिस्टेंसी मतलब क्या, एक सिस्टम है, डेटाबेस सर्वर सब भूल जाओ, एक सिस्टम है. ठीक है, 5 लोग उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, कैन यू मेक श्योर दैट फर्स्ट टाइम जो जिसने उसको मतलब at any point of time everyone is seeing the same picture? मतलब मैं एक बार रन किया, राइट, विदाउट अपडेटिंग एनीथिंग, मैं ये देख सकता हूँ कि जो फिर उसको मैंने रन किया तो मेरे को सेम रिजल्ट आएगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा. सो देन योर सिस्टम इज ए कंसिस्टेंट. एटोमिसिटी मतलब एक ऑपरेशन है, ब्रेक नहीं होगा, राइट, अगर वो कंप्लीट होगा नहीं तो नहीं होगा. Third thing is persistent tolerance. If I break my application into 3 parts, if one part is down, right, my application should run. कोई भी डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस ले लो, ये 3 थ्योरम के ऊपर टिके हुए हैं. एंड बिलीव मी, एनी डेटाबेस कैन फॉलो द 2 थिंग्स, नॉट द 3 थिंग्स. अगर किसी ने तुमको पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल नो एसक्यूएल, बेस्ट पार्ट ऑफ द टू एक्सप्लेन दिस कैप थ्योरम. ठीक है, सारे जितना एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, ऑल मेंटेन सी ए, कंसिस्टेंसी, एटोमिसिटी. नो वन इज परसिस्टेंट ऑफ. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज समझ लो आपके पास एक 3 नोड का एक एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल सर्वर है, डेटाबेस है, कोई भी ले लो, माई एसक्यूएल ले लेते हैं, उसमें 3 नोड है, राइट. एंड व्हाट यू मतलब आपने बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपने सोचा कि एक काम करते हैं, जो माई एसक्यूएल है ये भी एक ये देता है कि आपका अगर डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाता है, एक जगह पे ना करके मल्टीपल 3 इंस्टेंस बनाओ एंड डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. फिर एक की के जरिए आप डेटा को रियल टाइम पे कॉल कर सकते हो, कौन सा क्लस्टर में जाएगा, कौन सा नोड में जाएगा. ठीक है, बट द प्रॉब्लम हियर इज, assume that I am running a service which is available in 3 cities: Mumbai, Hyderabad, Bangalore. And what I did, I created 3 databases. Okay, one is for Mumbai, one is for Hyderabad, one is for Bangalore. So all data is not in a single place. ठीक है, but the problem here is, if the data which is containing the Hyderabad, it is down, my Hyderabad service will not work. It is not, my whole system is not a persistent tolerance. And या तो मेरे को हैदराबाद का डेटा सबके अंदर रख, या मैं तीनों डेटाबेस में तीनों डेटा रख सकता हूँ. बट उसमें एक प्रॉब्लम है, जब मैं राइट करूँगा, जब मैं कोई कुछ कमिट करूँगा, सेव करूँगा, तब मेरे को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तीनों डेटाबेस को कनेक्ट करना है. यस, क्या सुन लो, तीनों डेटाबेस को कनेक्ट करके सब जगह पे कमिट करना है, सो दैट आई कैन मेक श्योर कि सब जगह पे डेटा कंसिस्टेंट रहा. देन आई कैन मार्क इट, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट ए सॉल्यूशन. अगर उसमें एक सिस्टम डाउन है तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा.
You can't say this is a persistent tolerance. That is the main problem of SQL. अभी नो एसक्यूएल ने क्या किया, नो एसक्यूएल का फर्स्ट जो चीज़ है वो पहले बोल दिया कि भाई मैं सी को मानूंगा ही नहीं, एपी, ठीक है। मैं परसिस्टेंट टॉलरेंस हूँ, मतलब मेरा मोंगो का 3 नोड है, 3 नोड में सेम डेटा मिलेगा, बट कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। कुछ क्लस्टर में डेटा शायद थोड़ा देर में मिलेगा। मैं फेसबुक में कुछ टाइप कर रहा हूँ, राइट, आई एम डूइंग सम पोस्ट, but that post might not be available to all the places at single time. हो सकता है कि कुछ एक टेबल में मैंने, दो टेबल में मैंने, दो नोड में मैंने पुट किया उसको, बाकी नोड के लिए मैंने छोड़ दिया, एंड दे विल सिंक फ्रॉम दोज 2 नोड्स। हो सकता है 5 सेकेंड बाद आया, 10 सेकेंड बाद आया। कभी कभी आप ये चीज़ नोटिस करते हो, आपका फेसबुक में नोटिफिकेशन आता है, पर नोटिफिकेशन में टाइप कर तो कुछ मिलता नहीं कि नोटिफिकेशन कुछ है नहीं, थोड़ा देर बाद अगर देखते हो तो नोटिफिकेशन का अपडेट आता है। एनीवन नोटिस दिस थिंग? यस, नो? कैसे होता है ये? सेम चीज, नोटिफिकेशन सर्विस इज डिफरेंट एंड योर मैसेज सर्विस इज डिफरेंट, राइट? So whenever some message is coming, right, you get first the notification आ गया, डेटाबेस कंसिस्टेंट हो गया, बट आपका मैसेज सर्विस का एक्चुअल मैसेज का जो है दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, नहीं, उसका आया नहीं, तो नोटिफिकेशन जाते हो कुछ नहीं दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद आता है, फिर देख पाते हो। सो दिस इज कॉल्ड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, ओके, बट इट इज एटोमिक। मैं अगर करूंगा तो पूरा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कंसिस्टेंट थोड़ा देर में होगा बट पूरा होगा। परसिस्टेंट टॉलरेंस, यस, एक नोड डाउन है कोई बात नहीं, दूसरा नोड में तो डेटा है, कुछ टाइम बाद तो मिल जाएगा, अभी नहीं है तो नहीं है। सो योर रिक्वायरमेंट, like a social media, like a things, right, you are writing something that doesn't need the consistency, so you call that as a eventual consistency। अभी consistent नहीं है, 5 सेकंड बाद consistent हो जाएगा, okay। Now the problem, the first question I came here, right, कि आपको मोंगो क्यों चाहिए। मोंगो इसीलिए चाहिए, मोंगो बेसिकली, मोंगो में क्या होता है हाई लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ। इफ समवन आस्क यू दैट मोंगो एंड कैसेंड्रा में क्या डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। मोंगो का ऐसा है कि मोंगो का बहुत सारे रेप्लिकाज होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली 3 नोड होते हैं मोंगो में, मोंगो में 3 नोड होते हैं, उसमें से एक रहेगा प्राइमरी नोड, दूसरा 2 रहेगा सेकेंडरी नोड, ठीक है। अभी क्या होगा कि प्राइमरी नोड कुछ भी राइट करोगे, इट शुड ऑलवेज गो बाय प्राइमरी नोड, ठीक है, एंड जो सेकेंडरी नोड है वो उसका रेप्लिका होता है। बट जब रीड करोगे कुछ डेटा, कोई भी नोड में जाकर रीड कर सकता है। एंड व्हेन एवर यू आर राइटिंग इन द प्राइमरी नोड का आइडिया है कि आपको मतलब प्राइमरी नोड से डेटा सिंक होगा यूजिंग सम प्रोटोकॉल, ठीक है। मोंगो में गॉसिप प्रोटोकॉल यूज होता है, गॉसिप बहुत सारे प्रोटोकॉल है डेटा सिंकिंग के। एक प्रोटोकॉल यूज होता है कि मोंगो कैसे अपना प्राइमरी नोड से सेकेंडरी नोड में डेटा भेजता है, ठीक है। सो इफ यू आर रनिंग ए सिस्टम विच इज रीड इंटेंसिव सिस्टम, बहुत ज़्यादा रीड होता है, राइट कम होता है, यू शुड गो फॉर मोंगो, ठीक है, यू शुड गो फॉर मोंगो। बट ऑन द अदर साइड एक होता है कि मास्टर लेस बोलते हैं, मास्टर लेस आर्किटेक्चर इसी को बोलते हैं। जैसे कैसेंड्रा, उसमें कोई मास्टर नहीं है, सब अपना अपना बैगेज लेके आते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं एंड निकल जाते हैं। उसमें कोई मास्टर नहीं है, उसमें सिंपल होता है, डेटा सिंक होता है, एक सर्वर से दूसरा नोड में डेटा सिंक होता है यूजिंग सम प्रोटोकॉल, ठीक है। नाउ द थिंग इज लाइक हाउ आई कैन कॉन्फ़िगर दिस थिंग। थोड़ा थोड़ा कैसा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ना कि मेरे पास मल्टीपल नोड है। चलो मोंगो में मैं समझ लिया, मास्टर नोड में लिख दिया, मेरा काम खत्म है, राइट। बट मैं मास्टर नोड में तुरंत लिखा, उसके बाद तुरंत मैं जाके कोई चाइल्ड नोड से मैं मतलब जो भी दूसरा जो सेकेंडरी नोड है वहाँ से मैं डेटा को फेच करने का ट्राई करूँ, मेरे को तो डेटा नहीं मिल सकता है ना। यस, नो, नहीं भी मिल सकता है। बट तो हाउ आई कैन सेट, यू कैन सेट एवरीथिंग। मोंगो का एक होता है कि मोंगो में क्या होता है कि आप
उसको बोल सकते हो कि आप जब राइट करोगे तब मेक श्योर करो कि आपका 2 रेप्लिका में डेटा गया, फिर मेरे को बताओ कि कंप्लीट हुआ, उससे पहले नहीं। यू कैन कॉन्फ़िगर इट। ओके, सो दीज आर द थिंग, बेसिकली द बेसिक पर्पस इज, पहले आप डेटाबेस का एक इंस्टेंस को कॉल कर रहे थे, अभी आपके पास माइक्रो सर्विस होने के बाद यू हैव ए मोंगो का 3 डेटाबेस हो गया। अभी मोंगो का कोई भी डेटाबेस में आप कर सकते हो। सो यू आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रैफिक एंड यू आर एक्चुअली यूजिंग योर माइक्रो सर्विस। सो माइक्रो सर्विस को फिट करने के लिए आपको डेटाबेस को भी इवॉल्व करना पड़ेगा, राइट मोंगो। नाउ इफ एनीवन आस्क मी कि ऐसा कोई एसक्यूएल डेटाबेस है जो मेरे को ये सब फंक्शनलिटीज देते हैं, जो माइक्रो सर्विस में बहुत अच्छे चलते हैं, क्लस्टर बेस में बहुत अच्छे चलते हैं, यस देयर इज सम डेटाबेस व्हिच इज वेरी फेमस। कॉकरोच डीबी नाम सुना है किसी ने? Cockroach DB is very good in the microservice architecture, but it is not heavy load का database नहीं, बहुत ज़्यादा डेटा इसमें नहीं कसता। छोटा सा एप्लीकेशन है तो ठीक है, नहीं तो पोस्टग्रेस भी चलेगा। पोस्टग्रेस also is having some information, and it is also can be run in a multi cluster, but इसका कुछ limitation है, that you can research the things, okay. Okay, so too much thing. I think I initiate the conversation from a single thing, but we divert to lots of area, and I tried to make you understand that why it is needed, right, and how you can change your mindset from a microservice architecture. Okay, now I'll stop here. Then I'll ask you what is your next thoughts and how what what's the thing. Any question, anything you want to ask me? Bolo. We have 9 minutes because I think पहली बार टाइम पे एक दिन सेशन ख़त्म हो गया, because we haven't covered this EL के in practical. तो we have 9 minutes, so let's chit chat. बोलो क्या करना है? I'll stop recording.